today let's start with chapter number 5, Microsoft Excel 2016. In this chapter, I will tell you about the spreadsheet in MS Excel, what are its features, its components, its moving around, entering data, data types, how to do calculation in Excel and working with worksheet. Now spreadsheet in MS Excel. So Microsoft Excel, what it is a spreadsheet program. Microsoft Excel क्या है? ये एक spreadsheet program है that is used to record or analyze. What you can do, you can record and analyze any numerical data. It is the collection of columns and rows that form a table. ठीक है, collection है rows और column का जो एक table form करते हैं. Alphabetic letters are usually assigned to columns and numbers are usually assigned to row. The point where columns and rows meet is called cell. जहाँ पे columns और rows meet करते हैं वो क्या होते हैं? Cells होते हैं, right? So the address of the cell is given by the letters representing the column and the number representing a row. So now the features of Microsoft Excel 2016. So what are its features? It provides formatting features that enhance the data. ये formatting features होता है जो data appearance को enhance करता है. Right? It provides various features used for doing simple as well as complex mathematical calculation. ये quick search और अगर आपको डाटा को इसलिए रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं. It allows entering data in series with the help of replacement features if even the changing is based in single cell. अगर आप एक single cell में भी changes करना चाहते हो, so it will the data is recalculated. जो डाटा होता है वो दोबारा से कैलकुलेट होता है and it allows data to represent it in a graphical form और वो आपको ग्राफ फॉर्म में दिखाई दे. Right? These are some features. Now it's a micro Excel interface. ठीक है, ये आपकी स्प्रेडशीट है. I will tell you here. This is your quick access toolbar. This is your file menu. Right? What is this? This is complete the ribbon we say, and this is your what it is? It is your formula bar button, right? ये क्या है आपका insert worksheet button. This is worksheet navigation tab. This is normal view. This is page layout view and this is page break view. और ये क्या है आपका? ये vertical scroll और horizontal scroll इसे आप कहते हैं, right? Now understanding worksheet. Let's study about what are rows, what are columns, what are sheets and what are workbooks. So worksheet क्या होता है? Collection of rows and columns where a row and column meet. जहाँ पे भी आपके row और column meet करेंगे they form a cell. जहाँ पे भी आपके row और column meet करेंगे वो क्या बनाएंगे? Cell बनाएंगे. A cell are used to record data and each cell is uniquely identified. आप हर एक cell को uniquely identify कर सकते हैं by their cell address and they are usually labeled with letters. While जो rows होती हैं ये क्या होते हैं? Usually numbers. Now a workbook is a collection of worksheets. By default, workbook has 3 worksheets. You can delete and you can add more. 3 तो आपको यहाँ पे दिखाई देगी. उसके बाद अगर आप और ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो. Right? Now let's study about the components. First is active cell. What is active cell? The cell you are currently working. जिस पे आप अभी इस टाइम वर्क कर रहे हो वो आपका active cell होता है. A dark border outline cell. आपने देखा होगा एक डार्क कलर का बॉर्डर दिखाई देता है तो वो क्या है आपका एक्टिव सेल. देन वी हैव कॉलम हेडिंग. इट इज द लिस्ट ऑफ कॉलम्स इन द वर्कशीट. कॉलम आर लिस्टेड अल्फाबेटिकली. आपको A to Z आपको अल्फाबेटिकली देखने को मिलेगा. देन वी हैव फॉर्मूला बार जो कहाँ लोकेटेड होती है? बिलो द टूल बार जो डिस्प्ले करती है कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल. ये क्या करती है? जितने भी कंटेंट्स होते हैं एक्टिव सेल के उनको डिस्प्ले करती है. एज यू टाइप और एडेड डाटा व्हाट विल हैपन, चेंजेस जो होंगे वो आपको फॉर्मूला बार में दिखाई देंगे. देन वी हैव नेम बॉक्स. इट विल डिस्प्ले लोकेशन ऑफ द करंटली एक्टिव सेल. ठीक है, जो भी लोकेशन होगी करंटली एक्टिव सेल की वो आपको शो करेगी. देन वी हैव पॉइंटर्स. वो इंडिकेट करता है करंट लोकेशन, कहाँ पे आपका माउस पॉइंटर है. माउस पॉइंटर जो होता है वो चेंज करता है शेप को, जो क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है टाइप ऑफ टास्क यू कैन परफॉर्म. ठीक है, किस टाइप का टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हैं. Now we have row heading. So for the row heading, the rows in the worksheet and rows are numbered consecutively from 1 up to 65,536. So for that, sheet tabs each worksheet in a workbook
हर एक वर्कशीट जो होती है वर्कबुक में, उसमें शीट टैब होता है जो क्या आइडेंटिफाई करता है, शीट के नेम। टू मूव बिटवीन वर्कशीट यू विल क्लिक द एप्रोप्रिएट शीट टैब। आप किस पे क्लिक करोगे? एप्रोप्रिएट शीट टैब पे। वी हैव टास्क पेन जो अपीयर करता है व्हेन यू इनिशियली स्टार्ट एक्सेल, और ये क्या डिस्प्ले करता है? लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज्ड टास्क। जो टास्क पेन होता है वो डिसअपियर हो जाता है जैसे आप क्या करते हो? वर्कबुक को ओपन करते हो, राइट? Then we have tab scrolling button. Tab scrolling button they are used to move between worksheet in the workbook. ठीक है, क्या करते हो? वर्कशीट में मूव करते हो. Then we have toolbar जो क्या प्रोवाइड करता है? क्विक एक्सेस टू द मोस्ट कॉमनली यूज एक्सेल मेन्यू कमांड। जो स्टैंडर्ड टूल बार होते हैं उसमें आपको बटन्स देखने को मिलेंगे लाइक सेव एंड ओपन। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट मूविंग अराउंड इन अ वर्कशीट। देखो कुछ सेल पॉइंटर होते हैं जिनका हम यूज करते हैं एक सेल से दूसरी सेल में एंटर करने के लिए डाटा को। लाइक दिस इज द कमांड मूव वन कॉलम राइट। इसका मतलब क्या है? आपको एक कॉलम आगे जाना है, राइट? नेक्स्ट है दिस इज मूव वन कॉलम। देखो लेफ्ट की तरफ है तो आपको लेफ्ट जाना है। इंसर्ट डाउन एरो मतलब मूव वन एरो अप। ठीक है, आपको ऊपर जाना है। देन इंसर्ट अप एरो, वन रो डाउन जाना है। पेज अप मतलब आपको जो फर्स्ट रो है स्प्रेडशीट की एक्टिव सेल की उस पे मूव करना है। और व्हेन यू हैव टू पेज डाउन यू हैव टू गो टू नेक्स्ट शीट, अगली शीट पे जाना। कंट्रोल प्लस होम इट विल मूव द योर सेल काउंटर टू द टॉप मोस्ट रो। आप कहाँ पे चले जाओगे? जो बिल्कुल टॉप मोस्ट रो है। और कंट्रोल प्लस एंड आप लास्ट रो पे चले जाएंगे, राइट? नाउ आई विल टेल यू हाउ यू विल एंटर डाटा इन द वर्कशीट। नाउ हियर आर द डिफरेंट स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ओपन द न्यू वर्कशीट एंड शीट 1 आपको वहां पे एक्टिव वर्कशीट दिखाई देगी। क्लिक ऑन द, वो डिफॉल्ट होता है, क्लिक ऑन द सेल D1 एंड टाइप टाइम टेबल। देन यू विल क्लिक ऑन मर्ज एंड सेंटर जो आपके अलाइनमेंट ग्रुप ऑन द होम टैब पे देखने को मिलेंगे। नाउ क्लिक ऑन द सेल A2 एंड यू विल टाइप मंडे। Now you have to press right arrow key and type Tuesday in B2 and similarly the enter data into rest of। ऐसे ही आप क्या करोगे? रेस्ट ऑफ द सेल में डाटा को एंटर करोगे। Now click on cell A3 and type subject marks। आप A3 पे जाओगे और जो भी आपके सब्जेक्ट्स मार्क है वो आप यहाँ पे टाइप करोगे। देखो मैं यहाँ पे शीट दिखा देती हूँ आपको। पहले हमने क्या करा? शीट A में लिखा, ठीक है, A2 में मंडे, ट्यूसडे, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Then I have told you A3 subjects marks you will write, and then in A4 you will write the subject. Like we have write Hindi, English, Maths, Science, Computer, and so. Then in A5, what you will write? You will write the marks of the students. Like this, the data will be represented. Next is data types. We have different data. We have number data. We have टेक्स्ट डाटा एंड फॉर्मूला। फॉर नंबर डाटा इसमें आपके न्यूमरल होते हैं 0 to 9 और कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस माइनस हैशटैग ये सब आप यूज कर सकते हो। देन टेक्स्ट में यहाँ पे आपको अल्फाबेट, नंबर, स्पेसेस और कुछ स्पेशल डाटा भी होंगे बट दे आर नॉट यूज फॉर कैलकुलेशन, लेकिन इनका कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं होता। देन वी हैव फॉर्मूला, इसमें आपके नंबर वैल्यूज होंगी, आपके ऑपरेशन होंगे और सेल एड्रेस होंगे। ठीक है, हमेशा भी देखेंगे आप कैलकुलेशन जब वर्कशीट में करेंगे तो वो किससे स्टार्ट होता है? इक्वल्स टू साइन से। नाउ यू हैव टू डू द कैलकुलेशन इन एक्सेल। फॉर दैट एक्सेल प्रोवाइड्स वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑन डाटा। यू कैन परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस और फॉर्मूलाज। द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन आपको सेल में दिखाई देता है, यहाँ पे भी आप फॉर्मूले को एंटर करोगे। देन if the fourth row says C5 to G5 worksheet contains numbers that have to be added, मतलब वो आपको ऐड करने हैं। सो जो फॉर्मूला बार है जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको उसका क्या दिखाई दे जाएगा? सम दिखाई दे जाएगा। नाउ व्हाट हैपन, जो एक्सेल होता है वो आपको एक बिल्ड इन फंक्शन भी देता है लाइक सम, एवरेज एंड योर काउंट। देन वी हैव वर्किंग विद वर्कशीट। हाउ वी विल वर्क? फॉर दैट क्रिएटिंग अ न्यू वर्कशीट। अब आपको नई वर्कशीट क्रिएट करनी है। सो फॉर दैट सेलेक्ट द शीट बिफोर व्हिच अ न्यू शीट हैज टू बी रिप्लेस्ड। राइट क्लिक ऑन द शीट टैब एंड चूज इंसर्ट ऑप्शन। एक इंसर्ट डायलॉग बॉक्स आपको वहां देखने को मिलेगा। सेलेक्ट वर्कशीट ऑप्शन एंड देन यू विल क्लिक ऑन ओके। सो फॉर दैट स्विचिंग बिटवीन वर्कशीट, अब आपको स्विच ऑन करना है तो आप एरो बटन्स और वर्कशीट टैब का यूज करके स्विच ऑन कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज रीनेमिंग वर्कशीट। अब हमें क्या करना है? हमने वर्कशीट बना ली, उसको आपको रीनेम करना है। तो आप डबल क्लिक करोगे, राइट आफ्टर डबल क्लिकिंग ऑन द शीट टैब आप उसको रीनेम करोगे और नया नेम ऐड करोगे एंड यू विल प्रेस एंटर।
Now deleting worksheet. Now you want to delete the worksheet. For that you will position the cursor. जो भी आपको worksheet delete करनी है आप उसको click करेंगे and right click and choose delete option. और आप right click पे click करेंगे तो वहाँ पे delete का option आएगा, तो वहाँ से आप उस sheet को delete कर सकते हैं. Then saving the workbook. अब आपने कोई workbook बनाई है तो इसको save करना है, तो click on the file tab and choose save option. जैसे ही आप save as पे जाओगे dialog box appear होगा like this. यहाँ पे आपको दो options देखने को मिलेंगे, एक तो save और एक save as. ठीक है, यहाँ पे आपको तो आप सेव पे जाएं या फिर सेव एज पे जाएं. सो एंटर द फाइल नेम, और जैसे ही आप यहाँ पे फाइल नेम, जैसे यहाँ पे टाइम टेबल डाल दिया, फाइल नेम डालोगे एंड देन यू हैव टू सेव. तो जैसे ही आप सेव करोगे तो आपकी जो फाइल है वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी, राइट. देन योर फाइल विल बी सेव्ड ओवर. दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सेल. नाउ आई विल डू द एक्सरसाइज फॉर यू. सो फर्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन. The workbook contain multiple worksheet, workbooks, and none of these. So multiple worksheet. A keyboard shortcut which is used to create a new worksheet, that is shift plus. नई भी worksheet बनाने के लिए हम कौन सी क्या की का यूज करते हैं, 4 या F5 या F11, तो we will use F5. Then we have, there are alphabet across the top border of each worksheet. Row heading, column heading या range. ठीक है, अल्फाबेट्स होती है अक्रॉस द बॉर्डर, तो वो आपकी रेंज होती है. दिस सेल हैज अ थिक ब्लैक बॉर्डर अराउंड इट. थिक ब्लैक बॉर्डर किसमें होता है, आपका एक्टिव सेल्स में. दिस बार गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ द करंट सिलेक्शन. स्टेटस बार, फॉर्मूला बार या टास्क बार. करंट सिलेक्शन को कौन बताता है, स्टेटस बार. देयर आर नंबर्स ऑफ मार्क्ड फ्रॉम 1 to 1 0 4 8 4 5 7 along the left border. इसे कॉलम हेडिंग कहते हैं या फिर रो हेडिंग या लेफ्ट साइड नंबर्स, इनको हम क्या कहते हैं, रो हेडिंग. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द फिल इन द ब्लैंक्स. सो डैश इज द फर्स्ट विंडो व्हिच इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. तो क्या होती है, वर्कशीट. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. डैश इज द फर्स्ट विंडो व्हिच इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, दैट इज योर स्प्रेडशीट. Now we have a workbook that contains pages known as, जो वर्कबुक के अंदर पेजेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्कशीट्स. Next is dash bar is located at the right side of the name box, that is your formula bar. Dash is a group of contiguous cells that form a shape similar to the rectangle, that is your range. Next is dash is an insertion of row and column, that is your cell. ठीक है, जहाँ पे इंसर्शन होता है रो और कॉलम का वर्कशीट में, उसको हम सेल कहते हैं. That command moves the cell pointer to the last used cell, that is control plus end. उसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोल प्लस एंड. नाउ राइट T for true and F for false. Microsoft Excel supports only 2 types of data, text and formulas. False. 3 number also. Next is formula bar gives the information of the current selection. It's true. Then we have this key used to move the column to the one right. आगे, it's true. Next is range is the insertion of row and column in the worksheet. Sorry, control plus X secures the current workbook. It's true. Next is range is the insertion of rows and columns. It's true. Next is number data type contains alphabets, numbers, spaces or special character. False. We don't have alphabets in them. Now answer the following question. What is MS Excel used for? आपको बताना है कि MS Excel को हम क्यों यूज करते हैं and what are its features. I have told you the features, you will tell that. Now differentiate. आपको वर्कबुक और वर्कशीट में डिफरेंस करना है. What is cell and what is active cell? जहाँ पे इंसर्शन होता है वो सेल होता है, रोज और कॉलम का, और जिस पे आप वर्क कर रहे हो वो एक्टिव सेल होता है. हाउ कैन यू रीनेम द वर्कशीट? मैंने आपको रीनेमिंग बताई थी, आप वहां पे जाके रीनेम कर सकते हो. What are the different data types which can be entered in the Excel worksheet and write the steps to save a workbook? आप फाइल पे जाएंगे, वहां पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा सेव एज का, आप उस पर क्लिक करोगे, आप अपनी वर्कबुक का जो भी नाम रखना चाहते हैं आप उसको रखोगे, लास्ट में आप सेव करोगे, तो आपकी जो एक्सेल की जो शीट है वो सेव हो जाएगी. राइट, दिस वाज ऑल इन दिस चैप्टर.
Hope you understood each and everything. Now let's meet in next class. Thank you.